Has to get out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. So wird der indische Außenminister im diesjährigen Munich Security Report zitiert. Has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. That if it is you, it's yours, if it is me, it's ours. I think that's something, and I see, reflections of that. It's a democracy, but its leader, Narendra Modi, is no Democrat. Against Muslims was an important factor in this meteoric rise. I may be naive, but I expect a democratic revival in India. Broke the Bank of England. A man who is known and designated so by a nation as an economic has now pronounced his desire to break the Indian democracy. The elected Narendra Modi created a Hindu nationalist state, imposing punitive measures on Kashmir, a semi-autonomous Muslim region, and threatening to deprive millions of Muslims. Munich Security Conference, George Soros spoke on many issues, but specifically on open and closed societies, and called on institutional reform in India. How do you, as Foreign Minister of India, explain this when you're dealing with your Quad ministers in particular, as well as others? Well, look, I actually made 2 points. One, how the world is changing. It is rebalancing. It is less Euro-Atlantic. I don't think everybody gets that. I think old habits die hard. I mean, very candidly, there are still people in the world who believe that their definition, their preferences, their views must override everything else. So, since you mentioned this specific example, I don't know how familiar people are with what was said at the Munich conference, where essentially Mr. Soros said India is a democratic country, but he doesn't think the Prime Minister of India is a Democrat. By the way, a few years ago, he actually accused us of planning to strip millions of Muslims of their citizenship, which of course didn't happen. It was a ridiculous suggestion. But you have to understand what this actually means. I could take a view that the individual in question, Mr. Soros, is a old, rich, opinionated person sitting in New York who still thinks that his views should determine how the entire world works. Now, if I could only stop at old, rich and opinionated, I would put it away. But he is old, rich, opinionated and dangerous, because what happens is when such people and such views and such organizations, they actually invest resources in shaping narratives. Now, in this particular case, I mean, it is very clear that he has very strong political preferences. He actually thinks that, doesn't matter that this is a country of 1.4 billion people, where people like him think an election is good if the person we want to see wins. If the election throws up a different outcome, then we actually will say it's a flawed democracy. The beauty is, all this is done under the pretense of advocacy of open society, of transparency, etc. So, for me, it's actually necessary today that we have today a serious conversation
on democracy. When I look at my own democracy, I mean, I have today a voter turnout which is unprecedented, electoral outcomes which are decisive, electoral processes which are not questioned. We are not one of those countries where after the election somebody goes to arbitrate in court. Okay, we don't have any hanging chads either, and you know, where you actually say, I will sit in judgment over the verdict of voters. Now, my sense of democracy is the voter is supposed to decide. And it worries us. It worries us because, look, we are a country which went through colonialism. We know the dangers of what happens when there is outside interference in whatever guise in your politics. If you do this kind of scaremongering, like millions of people will be deprived of citizenship, it actually does real damage to our societal fabric, because somebody out there believes you, and you don't leave it to accident, by the way, you back it up with an operation. So you create that kind of fear psychosis, and then you use that to validate your original judgment. So I do think today, between, you know, whose democracy, whose globalization, why, you know, the transparency of how global processes work, these are real issues which need to be debated. जयशंकर जो हैं, जो जयशंकर इनके टॉप, और जिनको हमेशा मैंने तो बहुत ओपनली उनका कहा कि बड़े जबरदस्त, इनके बड़े कूल, वो भी टेम्पर लूज कर गया अपना ऑस्ट्रेलिया के अंदर। वो कहते हैं कि ये जो है, ये क्या मतलब रिच, ओपिनियनेटेड और ये क्रिमिनल, मतलब नहीं क्या गालियां वालियां दे दी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जॉर्ज सोरोस को। उससे पहले वो अडानी के ऊपर वो छापे पड़ गए, तो वो अडानी वो ऊपर से उठ के थड़ करके नीचे, ठीक है। अच्छा, ये कुछ चाइना कर रहा है, ये कौन कर रहा है? ये कुछ चाइना कर रहा है, इसके पीछे चाइना है। मतलब देखिए अकल की बात, इनको भी कुछ इसके पीछे कुछ चाइना है। अच्छा, उसके बाद डॉक्टर जयशंकर साहब का स्टेटमेंट अगर सुने तो उन्होंने एक चीज एंड में ये भी बोला था, डेंजरस क्यों बोला था? ताकि वो आप यहाँ जब आप पैसा लगाओ, जब आप यहाँ एनजीओ को फंड करो, जब आप यहाँ ये जो फर्जी 2% के न्यूज साइट्स हैं उनको फाइंड करो, उनके थ्रू प्रोपेगेंडा चलाओ, जब आप डिसइंफॉर्मेशन लैब चलाओ। मतलब सोरोस ने कहा है कि मैं इंडिया में मोदी को डिसलॉज करूंगा, ये अभी आपने आज भी बोला उसने, और पहले बोल चुका है, आई हैव कमिटेड बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू इट। एक बार तो ये आप पर $8 बिलियन भी बोले इसने, एक बार इसने, और एक और बार बताओ, इसकी वाइफ चाइनीज है, इसकी उसका जर्मन पासपोर्ट है, सॉरी उसका जापानीज पासपोर्ट है, बट शी चाइनीज। ये 3-4 लोग हैं जिनकी चाइनीज वाइफ, और 4 में से 3 ऐसे जिनकी आधी उम्र की बीवी है। और चाइना में एक कहावत है, मतलब आपको कोई भी चाइनीज बता देगा, आई नीड चाइनीज आउट ऑफ चाइना इज आउटपोस्ट ऑफ चाइनीज इंटेलिजेंस। मैं आपको बताऊं तो ये इसके कारण कर रही है, to all this, and he has been funding NGOs, he has been funding news agencies, he has been funding a lot of protests. हमारे जो अभी विस्ट्रॉन में पंगा हुआ, वहाँ भी वो भी फंडिंग कहीं एक NGO से आई थी। हमारे जो कोविड में LG प्लांट में लीक हुआ, उसकी फंडिंग भी कहीं से आई थी, वो लीक कराया गया, अधिवेशन हो रहा है। आपको पता ऑक्सफोर्ड में अधिवेशन हो रहा है, और राहुल गांधी जी जा रहे हैं, बोलेंगे उस पर, कैम्ब्रिज में बोलेंगे शायद, और सुने में आया है कि ये जो अभी उनको स्मृति ईरानी जी ने बहुत अच्छा वर्ड एक यूज किया, he has to meet the might of India। देखिए, एक बॉब ब्राउन फाउंडेशन ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, अदानी को लेके हर छोटी बड़ी खबर फैलाते हैं, क्योंकि अदानी ने को जब माइनिंग राइट्स मिले थे ऑस्ट्रेलिया में, तब से जॉर्ज सोरोस अदानी के पीछे लगा। और आज न्यूयॉर्क टाइम्स जो आपका फेवरेट पेपर है, उसकी हेडलाइन अगर आप देखिए आज या कल की, उसमें लिखा है कि 130 बिलियन ऑफ शॉर्ट सेलिंग could not cripple the Indian market। और अदानी साहब के शेयर हैव रिकवर्ड बाय 70 to 75%। मैं तो शॉर्ट सेलर बना था जॉर्ज सोरोस, और उसको जवाब दिया हमारी गवर्नमेंट ने, और उसको औकात बता दी। अब की बार गवर्नमेंट को चेंज करके एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लानी चाहिए। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब ये गवर्नमेंट क्या अनडेमोक्रेटिक है, ये गवर्नमेंट क्या डिक्टेटरशिप है, ऑटोक्रेसी नहीं। तो अब बाकी राहुल गांधी जी तो उनकी समस्या तो एक ही है हमारे भाई की, वो मोदी विरोध करते करते देश का विरोध कब कर लेते हैं उन्हें पता ही नहीं लगता, वो लक्ष्मण रेखा पार कर जाते हैं। वॉस्टेल नाम है, इट्स वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूएस फर्म्स, उनको हायर किया अदानी साहब ने, बिग 4 को हायर किया ऑडिट के लिए, और ही इज टेकिंग दिस
क्या नाम है, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नाउ हिडेनबर्ग, और आपको पता है हिडेनबर्ग का मालिक वाज एम्बुलेंस ड्राइवर। अगर हिडेनबर्ग के रिपोर्ट में दम होता चीमा साहब, तो ये जो शेयर ऊपर आ गया, जो शेयर से रिकवर्ड 70 to 70%, हाउ इज दिस पॉसिबल? बट द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर, वी आर रेडी, वी नो यू आर कमिंग एंड वी विल हैंडल इट।